So students, as we have started with the structure of DNA, the topic in the molecular basis of inheritance, in which I have told you about the basic structure and Watson and Crick model that was given by Watson and Crick. So these are the salient features of the DNA which are given by Watson and Crick. Means these are the salient features of Watson and Crick model of DNA. So first point is, means if the question comes in exam, so you have to draw the diagram along with these points that you have to write, and it is very important topic, very important for board exams also. So when the Watson and Crick model or structure of DNA comes in your exams, then you have to write these points along with the structure. Okay. So first point is, it is the largest biomolecule in a cell. So if we talk about the biomolecules, all the biomolecules in a cell, it is the largest one. It is overall negatively charged. अगर हम overall charge देखें DNA के ऊपर, that is a negatively charged biomolecule. It is made up of two polynucleotide chains that we have already discussed. So the two polynucleotide chains are there. Here you can see this diagram I have already explained you in detail. So here I have drawn to just make you clear. So these are the two polynucleotide chains which are present in the DNA. These polynucleotide chains are anti-parallel to each other. What does it mean? It is very important point. Anti-parallel means they run parallel to each other, but in opposite polarity. Like 5-1, if the one chain is running in 5- to 3- direction, then the other chain will be run in 3- to 5- direction. What does it means? For that I have shown you this detailed structure of the DNA. So here this is one polynucleotide chain and this is second polynucleotide chain. Okay. So you know that the backbone of the polynucleotide chain is made up of sugar. This structure I have shown you is the sugar, and this is the phosphate. This is the phosphate group, and this is the nitrogenous base. So nitrogenous base I have shown you here with the N. Okay. So this one complete structure will form one nucleotide. Okay, nucleotide के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. So these nucleotides, they join with each other to form the complete polynucleotide chain. In one nucleotide, this sugar molecule, if you will see, it is first carbon, this is second carbon, this is third, this is fourth, and this is fifth. Okay, so its carbon are given the term 1-, 2-, 3-, 4-, 5-. ओके, सो इसके जो कार्बन है उनको हम 1, 2, 3, 4 से नहीं रिप्रेजेंट करते, 1-, 2-, 3-, इस तरह से. सो दिस इज 1-, दिस इज 2-, दिस इज 3-, दिस इज 4-, एंड द लास्ट वन इज 5-. So you know that at the first position of the sugar, the nitrogenous base is present, and at the fifth position, phosphate group is present, and at the third position, OH functional group is present. It is also actually included in this part. ठीक है, तो फर्स्ट के ऊपर नाइट्रोजनस बेस होता है, थर्ड के ऊपर OH ग्रुप होता है और फिफ्थ के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है. ठीक है. सो एट द थर्ड पोजीशन, the oxygen of the first one nucleotide, it will form bond with the phosphate of second nucleotide. The oxygen of first nucleotide will form the bond with the second nucleotide, and this bond, you know that we have already discussed, is called glycosidic bond. इस bond को हम क्या बोलते हैं? Sorry, not glycosidic. This is phosphodiester bond. Okay. So this bond is called phosphodiester bond, and you know that the carbon at 3- position, which is having OH group, will form bond with the phosphate group of the next sugar or nucleotide, and at this point you can see the phosphate group is free. जो polynucleotide chain होगी, जो इसके यहाँ पे nucleotide होगा, उसका जो phosphate group है 5- position पे, वो free होगा, क्योंकि कहीं पे तो उसको chain को end करना पड़ेगा ना. So this carbon or this position at which the phosphate group is free without forming any phosphodiester bond with the next nucleotide, this end is called 5- end of DNA. Clear? This is called 5- end of DNA. Now this is first nucleotide, it will form bond with the second nucleotide. Okay.
So they are connected with each other with the phosphodiester bond. Now this is second nucleotide, सेम वही चल रहा है, ये 5' पोजीशन है, ये 3' है. अब ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है. अब मैंने आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शो किया है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज फ्री एट 5' एंड विद द फॉस्फेट ग्रुप, एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड इज फ्री एट 3' एंड विद द OH ग्रुप. क्योंकि दूसरी साइड पे, अगर इस साइड पे 5' पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है जिसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की है, तो इसकी अपोजिट साइड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो उसके 3' पोजीशन पे जो OH ग्रुप होगा it will be free. So this end will be called as 3' end of the DNA of the polynucleotide chain. Is it clear? This is one chain. So this is the 5' end because phosphate group is free here, and the opposite will be always 3' end where OH group will be free here. तो ये हो गया एक polynucleotide chain की बात, 5' and 3' end. Okay. Now let's come to the next polynucleotide chain. This is the second polynucleotide chain, and they run anti-parallel to each other. That's why the position of this sugar molecule, pentose sugar, will be in the opposite direction. So here I have shown here oxygen upward, but here I have shown oxygen downward because they are in the opposite direction. Okay, they are inverted, they are present in the inverted form. So here you can see 5' position, they have phosphate group. This is the nitrogenous base, they have hydrogen bonding by which they are attached with each other. ये हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं. This is the 3' end at which the OH group is free. अब यहाँ पे आपने देखा इस साइड पे कौन सा था, 5', तो इसकी जो अपोजिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी वहाँ पे हमेशा कौन सा एंड फ्री होगा, 3' एंड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी पैरेललिटी. फिर वही 5' के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है. फॉस्फेट ग्रुप विल फॉर्म द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, then third nucleotide, and then final last nucleotide. इसके 3' के ऊपर OH है और 5' के ऊपर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3' एंड, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, 5' एंड. क्लियर? सो इफ दिस एंड इज 5', दिस एंड विल बी 3', और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो अपोजिट एंड होगा दैट इज 3' एंड अपोजिट विल बी 5'. क्लियर? So this is called anti-parallelity nature of the two polynucleotide chains of DNA, that is they run in the opposite direction, 5' to 3', 3' to 5'. Clear? Next is the backbone of each polynucleotide chain is made up of sugar phosphate group that we have already discussed. जो इसकी backbone है वो किससे बनी हुई होती है, sugar phosphate group से. So next point is the backbone of each polynucleotide chain is made up of sugar phosphate groups. As you already know that this is the backbone of the polynucleotide chain or the DNA and they are made up of sugar phosphate groups. तो इसके अंदर इस तरह से sugar phosphate भी आप show कर सकते हो. Okay. Next is complementary base pairing. It is very important point that the base pairing is always, base pairing means these nitrogenous bases are called, they are pair up with each other with hydrogen bonds, that is why they are called base pairs, and they show complementary base pairing. One point is that in the space accommodated between the two polynucleotide chain, so exactly one purine and one pyrimidine will fit in that space. Okay, so and the pairing of purine with the pyrimidine is also complementary, it is also fixed, that is adenine will pair up with thymine, cytosine with guanosine. Okay, so or opposite, T with A, G with C. A is the purine, T is the pyrimidine. Okay, C is the purine, G is the pyrimidine. Okay, so sorry, G is the purine and C is the pyrimidine. So by this you can find out हमेशा जो pairing होती है वो एक प्यूरिन और एक pyrimidine की होती है, वो भी fixed होती है, A with T, C with G. Why is that so? And the bond between these two is the hydrogen bond. Between A and T is the double hydrogen bond, and between C and G is the triple hydrogen bond. Next is the helical double chain coiled over each other, means these are the two chains, polynucleotide chains, and they are coiled over each other in the helical form. A 3D structure is there. Actually DNA is a 3D structure in a cell. Next is one complete helix or one complete turn of helix. Actually one complete helical turn is equals to 34 angstrom.
So 1 complete turn, its length is 34 angstrom, and in 1 complete turn total 10 base pairs will be there. एक complete turn में 10 base pair होते हैं और एक base pair के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 34 angstrom डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3.4 angstrom. कुछ बुक्स में इसमें नैनोमीटर में वैल्यू दी हुई है, तो यू कैन कैलकुलेट बिकॉज नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर एंड angstrom is 10⁻⁻10 meters. Okay, so you can calculate in nanometer also. And in 1 complete turn total 10 base pair, that number is fixed, and the diameter is 20 angstrom, means the width of the DNA helix is 20 angstrom. So this is all about Watson and Crick model, their salient features and the structure. And the next one is the packing of DNA. You know that DNA is very big in length, it is very long biomolecule, so it has to be accommodate itself in a very small sized cell, which is a microscopic structure. So to accommodate itself in a small cell, it has to package itself, it has to coiled over each other, and it's for coiling it requires some surface which is in the form of protein. So let's see the packing of DNA. So let's see the coiling or packing of DNA helix. As I told you, the length of DNA is so big that it cannot be accommodated inside the cell. So if we have a big thread and we have to accommodate that thread into a single small spherical structure, what we have to do, we have to just coil that thread and just have it to fit it inside the circular structure. Similar is with the DNA. तो DNA जो है वो एक बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उसको सेल के अंदर अकोमोडेट होने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट होने के लिए कॉइलिंग करनी पड़ती है. ठीक है, तो अगर उसको कॉइलिंग करनी है तो उसको कुछ सरफेस भी चाहिए जिसके ऊपर वो कॉइल हो सके, तो उसके लिए उसके पास प्रोटीन्स होते हैं. ओके, सो लेट्स सी द कॉइलिंग ऑफ दिस DNA. फर्स्ट आई हैव शोन हियर इज द DNA हेलिक्स, नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट वी हैव स्टडीड द वाटसन एंड क्रिक मॉडल. When it start coiling, जैसे आपने टेलीफोन कोड देखा है, टेलीफोन की जो वायर होती है वो इस तरह से अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो बहुत बड़ी होती है, या स्प्रिंग होता है उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसको कॉइल कर देते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी द DNA हैड स्टार्टेड कॉइलिंग. ओके, तो DNA की जो हेलिक्स है उसने कॉइल करना शुरू कर दिया है. ठीक है, इस तरह से कॉइल होके when it started coiling, then it will attach itself with the proteins which are called histone proteins. तो जो DNA, जो एक्चुअल में जो DNA है, क्रोमोसोम्स हैं, वो DNA की कॉइलिंग से बनते हैं और इनके अंदर DNA हेलिक्स के साथ क्या होते हैं, साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप्स के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1. H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 5 टाइप्स के होते हैं. और जब DNA हेलिक्स ये जो 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स के एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अराउंड कॉइल हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम हैज़ द कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ये वाले, इनके सभी 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल कितने हो गए, 8. और एक जो एक्स्ट्रा H1 प्रोटीन है वो कोर के बाहर रहेगा. यहाँ पे मैंने डार्क कलर का शो किया, दैट इज H1 प्रोटीन विच इज़ आउटसाइड द कोर, एंड दिस इज द कोर ऑफ द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स ओवर विच द DNA विल कॉइल इटसेल्फ. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम. ठीक है, कोर ऑफ हिस्टोन ओवर विच द DNA हेलिक्स विल पास. कोर हैज़ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3 एंड H4. H1 इज प्रेजेंट आउटसाइड. ठीक है, तो DNA हेलिक्स की कॉइलिंग के बाद जब वो हिस्टोन के साथ अटैच हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, न्यूक्लियोसोम. नाउ दिस फर्दर कॉइलिंग विल टेक्स प्लेस अराउंड द न्यूक्लियोसोम्स, एंड दे फर्दर स्टार्टेड अगेन कॉइलिंग. तो जो न्यूक्लियोसोम्स का कॉइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड. ठीक है, तो जब DNA हेलिक्स ने कॉइल किया, न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो गया. न्यूक्लियोसोम ने जब कॉइलिंग किया तो यहाँ पे सोलिनॉइड फॉर्म हो गया. अब ये फिर से सोलिनॉइड जो है और ज़्यादा कॉइलिंग करेगा और इस तरह से थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, जो कि हमें सेल में दिखाई देता है जनरली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि सेल जो है वो हमें क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करता है, क्योंकि कंप्लीट कॉइलिंग तभी होती है. तो ये है क्रोमैटिन. दिस क्रोमैटिन
thread-like structures, they will further undergo coiling, and ultimately this shape will be formed, which is the actual shape of a chromosome. जो हम क्रोमोसोम दिखाते हैं उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, डीएनए है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो गया है और न्यूक्लियोसोम उसने फॉर्म कर लिया है, और ये न्यूक्लियोसोम फिर फर्दर कॉइलिंग करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम. सो दिस इज़ द पैकिंग और कॉइलिंग ऑफ डीएनए. तो जितना भी एक ऑर्गेनिज्म का एक सेल के अंदर डीएनए होता है वो सारा का सारा कॉइल होके क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाता है, और क्रोमोसोम्स को ईजिली एकोमोडेट करना ईजी हो जाता है सेल के लिए, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएनए. डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स. And this number of chromosomes, their structure, their gene, the location of gene, the number of genes, that is fixed in a specific organism. Okay, so this is all about packing. I will show you one video of this packing or coiling of DNA, then you will be more clear. Let me tell you an interesting fact. If all the DNA from a single cell is pulled out and stretched, then it would touch approximately 2 meters in length. Yes, it's that long. But if the DNA stretch is so long, then how does it fit into such a tiny nucleus? We know that a cell is extremely tiny, and the nucleus occupies a very small portion of the tiny cell. So how does such a long stretch of DNA fit into such a tiny space? The answer is quite simple. How do we fit a long telephone wire in a small space? That's right, using the process of coiling. Similarly, coiling the DNA helps reduce its volume and fits it into the tiny nucleus. But what does it coil around? Is there any support for the structure? Or does the long stretch coil around itself? Well, there are highly specialized proteins that help us in this. These are called the histone proteins. A total of 5 histone proteins help in the wrapping of the DNA molecule. Histone proteins, namely H1, H2A, H2B, H3 and H4, serve this purpose. Among these, the H2A, H2B, H3 and H4 come in doubles to form a ball-like structure which looks somewhat like this. The stretch of DNA then easily wraps around this octamer formed. And what function does the H1 serve? Basically, the H1 protein helps in attaching the DNA to the octamer and keeping it intact on place. In other words, it helps to hold the complete structure. This unit of the DNA string wrapped on the histone core is called nucleosome. Does this structure resemble something? It does. It looks like a bead having a string wound around it. That is the reason why the nucleosomes are referred to as the beads on a string structures. Any idea what kind of a structure is obtained from this? This kind of coiling forms the basic unit for the formation of the chromatin structure. Yes, we know that chromatin and thus the chromosomes are made up of DNA. So it is this pattern of arrangement of the DNA that forms coils and helps in the formation of the chromatin structure.